सिमिलर थॉट्स इंडिया के भी हैं। इंडिया भी अगर अपने बारे में सोचे तो इंडिया यही सोचते हैं कि हम एक टाइम पे सोने की चिड़िया थे, सारे जो हर चीज हमसे चुरा के लेके गई गई है। तो देखा जाए तो इंडिया और चाइना सेम ड्रीम अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं और सेम टाइम से कोशिश कर रहे हैं। अगर हम 1962 का युद्ध देखें तो ये युद्ध एक पॉलिटिकल फेलियर था और ये मिलिट्री लीडरशिप का भी फेलियर था। लेकिन इस युद्ध में जहां पर भी इंडियन सोल्जर खड़ा होकर के लड़ा है, जहां पर इंडियन फोर्सेस लोकल कॉन्फ्लिक्ट्स में खड़े होकर लड़े हैं, वहां पे चीनी फोर्सेस को उन्होंने रोका है। But explicitly, if you can talk a little bit about that, what happened in 1967, from 1962 to 1967, and then जो इंडिया और चाइना की लड़ाई होती है, which is a forgotten war, as you mention in even your book title says, it's a watershed 1967 forgotten victory of India over China, right? What happened there? Why was it forgotten? And how उसकी वजह से how has that changed the narrative of last whatever 50 more years? अगर हमारी कॉन्फ्लिक्ट कम होती है, जो लार्जर कॉन्फ्लिक्ट की जो चांसेस है, द डिस्प्यूट्स विल रिमेन, सो देयर विल बी कंपटीशन, कोऑपरेशन शायद कोई कई जगह में हो चाहे नहीं हो, लेकिन कंपटीशन जरूर रहेगी। एंड आई थिंक इंडिया एंड चाइना वुड मूव फ्रॉम अ फेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट टू अ फेज ऑफ कंपटीशन। देयर वुड बी द ओकेजनल नज टुवर्ड्स कॉन्फ्लिक्ट। क्वेश्चन ये है कि जब हम चाइना के बारे में सोचते हैं, व्हेन आई आल्सो थिंक अबाउट चाइना, बहुत पॉजिटिव इमेज नहीं आती है माइंड में, राइट? तो बिफोर वी अंडरस्टैंड इंडिया एंड चाइना, अगर हमें चाइना को ही समझना हो एज अ कंट्री, लाइक फ्रॉम योर अंडरस्टैंडिंग, राइट, हाउ विल यू टॉक अबाउट चाइना की पोजिशनिंग, चाइना इन इटसेल्फ, उसके गोल्स, लाइक व्हाट इज चाइना एग्जैक्टली इन देयर फ्रेम ऑफ माइंड एक्चुअली? थैंक यू ईशान, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ आपके शो में बुलाने के लिए, एंड इट्स अ प्लेजर टू बी हियर। फर्स्टली that's something that I was looking forward to, and so happy to be here and look forward to the conversation. आपका सीधे सीधे चलते हैं आपके सवाल पर। तो ये जो चाइना के विषय में आपने बात करी है, चाइना को समझने के लिए हमें थोड़ा उसका जो इतिहास, उसका जो पीछे जो हिस्ट्री है, उसको समझना भी जरूरी है। अगर हम चाइना के बारे में आज के दौर के हिसाब से, अगर आज के दौर के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, तो वो देखी जाएगी कि देखा जाता है कि चाइना काफी एग्रेसिव लेता है, वेदर इट इज रिस्पेक्ट टू इंडिया, वेदर इट्स रिस्पेक्ट टू द इंडो पैसिफिक जोन। इंडो पैसिफिक का मतलब जो पैसिफिक नेशंस, पैसिफिक समुद्र के आसपास जो और इंडियन ओशन के आसपास जो लैंड्स है, जो नेशंस है। और इस वक्त विश्व का जो मुख्य सेंटर पॉइंट है और जो फोकस है यूक्रेन और रशिया के युद्ध को छोड़कर, वो आपके इंडो पैसिफिक एरिया में जाता है। और इधर चाइना का काफी दबदबा है, चाइना का एग्रेशन है, पोस्चरिंग है। और इसको समझने के लिए थोड़ा हमको पीछे जाना चाहिए। कहाँ जाना चाहिए? हमें थोड़ा 200 साल हम अगर पीछे चले, एक झलक देखें उस वक्त क्या होता, क्या हुई थी उस वक्त चाइना के साथ। कि चाइना अंडरवेंट अ सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन। हाउ वाज दैट? क्योंकि पहले क्या था कि चाइना में जो किंग डायनेस्टी थी, वो जब वो चली गई और उसके बाद में जो चाइना अंडरवेंट डाउनफॉल, क्योंकि उनके अगेंस्ट में जो है पहले तो अंग्रेज आए अर्ली 1900s में, और चाइना के ऊपर अटैक्स हुए जापानीज फोर्सेस के, और काफी चाइना बैकफुट पे था। उसके बाद में चाइना जो है आपके एक सिविल वॉर के दौर से गुजरा, जहां पर चाइनीज इंटरनल स्ट्राइफ काफी ज्यादा थी और दो ग्रुप्स थे। एक माओ जेडोंग का जो कम्युनिस्ट ग्रुप होता था, और एक कुओमिंटांग का था जो कि चियांग काई शेक हेड करते थे। और ये जो सिविल वॉर थी, ये जब वो खत्म हुई सिविल वॉर और माओ जेडोंग की फोर्सेस जीती, तो जो कुओमिंटांग की फोर्सेस थी उनको हटा दिया गया, वो जाकर ताइवान में बस गए। और ताइवान में चियांग काई शेक के फोर्सेस जब बसे, तो ताइवान और चाइना, मेनलैंड चाइना के बीच में काफी हद तक टेंशंस वहां से शुरू होती और आज तक चल रही है। हमें मालूम है कि चाइना ताइवान को अपना मेनलैंड का हिस्सा मानता है और पीसफुल रीयूनिफिकेशन की बात करता है, अमंग्स द अदर थिंग्स दैट आई जस्ट मेंशन। तो इसका हिस्ट्री भी वहां जाता है। अभी 1940s में जब वो चीनी
न्यू चाइना के रूप में चाइना उभरा 1949 में, तो वो 1949 में चाइना ने एक प्लान तैयार किया, उसे कहा गया 100 Years वॉर। 100 Years वॉर का मकसद क्या है? 100 Years वॉर का मतलब यह है कि चाइना जो ह्यूमिलिएशन के दौर से गुजरा है था तब तक, उसके पहले, और जो स्ट्राइफ हुई थी, सिविल वॉर हुई थी, उसके चलते चीनी काफी वर्ल्ड में उनका मानना था कि उनकी जो वैल्यू है, उनकी जो स्टॉक है, उनकी जो इन्फ्लुएंशियल एबिलिटी है, वो काफी हद तक पीछे हो गई थी। और वो दिस वाज नॉट इन कीपिंग विद what the Chinese thought was about their own country. Chinese thought about their own country was governed by a 15th century, 16th century thought, early thought, जिसके बाद वो century of humiliation शुरू हुई। और जो 15th 16th century में चाइना जब अपने पीक पे था, उस थॉट को उसको बोलते थे तियानशिया। तियानशिया का मतलब ये था कि चीन जो है विश्व का सेंटर पॉइंट, और इसको ये भी बोलते थे heavens under the sky. And what that meant was China was like a heaven and everybody was around it, and China was the center of the earth. Tianxia जो है Chinese thought का को embody करता था। तो 1949 में इन्होंने ये तय किया कि चीन को उस जगह तक, उस कगार तक वापस लेके जाएंगे, उस मंजिल तक वापस लेके जाएंगे जहां चीन की असलियत आइडेंटिटी है। और वो 1949 से उनकी जो जर्नी चालू हुई, वो खत्म, उनके जो प्लान्स में 2049 में खत्म होती कि वहां पर चाइना आकर के वर्ल्ड में अपनी जगह वापस बनाएगा 100 साल। और ये चाइनीज लॉन्ग टर्म प्लान 1949 से शुरू होती। उसके बाद माओ सेतुंग, उसके बाद में जो पूरी हिस्ट्री है चाइना की, वो हम जानते हैं कुछ हद तक कि चीनी किस तरीके से कम्युनिज्म से गुजरे हैं, द चाइनीज नेशन। और फिर कम्युनिज्म के जाने के बाद में माओ जेडोंग आए। माओ जेडोंग ने लिबरलाइजेशन थोड़ा का दौर चालू किया, उसमें चाइनीज बिकेम मोर बिजनेस फ्रेंडली, चाइना वांटेड टू बिकम एन इकोनॉमिक पावर। और सोवियत यूनियन के कोलैप्स होने के बाद में चीन को 1991 के आसपास यूएस बर्लिन वॉल कोलैप्स और सोवियत यूनियन कोलैप्स के बाद में चाइना को यूएस ने वापस इंटरनेशनल सिस्टम में इंट्रोड्यूस किया कि चाइना काफी हद तक चेंज हो चुका था 1950s 60s की कम्युनिस्ट स्टेट से। डेंग जाओपिंग जो आए थे माओ जेडोंग के बाद, उन्होंने जो मॉडर्नाइजेशन और लिबरलाइजेशन और थोड़ा बिजनेस फ्रेंडली जो दौर शुरू किया था 70s और 80s में, उसके चलते चाइनीज जो चाइनीज रिलेशंस विद द वर्ल्ड दे हैड इम्प्रूव्ड। और 90s में चाइना वापस इंटरनेशनल सिस्टम में आया। और वो है जो वो आज हम देखते हैं, वो चाइना है जो 90s में वापस इंटरनेशनल सिस्टम में आया, लेकिन उनकी सोच 1949 की। और वो ही सोच जो है 2013 में जब शी जिनपिंग पावर में आए, तो शी जिनपिंग एक बेहद एम्बिशियस नेता बन के उभरे। उनका प्लान ये था कि 2049 तक जो चाइना को एक सुपर पावर बनाने मकसद या जो एम था, जो 1949 में शुरू हुआ था, उस चीज को वो एक्सेलरेट कर देंगे। एक्सेलरेट मतलब कि उसको प्रीपोन कर देंगे। और इस वजह से 2013 से लेकर के जब शी जिनपिंग आए और आज तक आप अगर देखें, तो चाइना का जो एग्रेसिव पोस्चरिंग है वो काफी चेंज हो गया है, काफी ज्यादा एग्रेसिव हो गए हैं, क्योंकि शी जिनपिंग का भी अपना एम्बिशन है। और चाइना का जो 2049 का गोल है, उसको भी शी जिनपिंग चाहते हैं कि उसको आगे ले आया जाए, एंड टू मेक इट हैपन मच बिफोर 2049. That is why you see a lot of these a change. China, you must also understand that China has changed, had changed in 2013 from the nation that it was in the 70s and 80s. How it had become economically much stronger. जो 90s में चाइना आया, वो चाइना जब आया तो चाइना का वो इंट्रोडक्शन फेज था। उसके बाद चाइना का आया कंसोलिडेशन फेज। अभी आया है एग्रेशन फेज, जिसके वजह से हम देख रहे हैं एक कॉन्फ्लिक्ट का दौर, कि या तो ट्रेड का कॉन्फ्लिक्ट है, या मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट है, या पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट है, या क्वाड का कॉन्फ्लिक्ट है, या मैरिटाइम का कॉन्फ्लिक्ट है। हर जगह चाइना
the Chinese conflict with other nations, especially with the powers, superpowers such as the US, is very much predominant. And you see China making a claim to be a superpower, and that has only happened after the ascent of Xi Jinping. और वो जो 2049 का जो वक्त था, उसको आप मान के चलिए कि वो 2030s में वो शी जिनपिंग ले आना चाहते हैं। ओके, तो बहुत इंटरेस्टिंग है कुछ चीजें व्हाट फ्रॉम योर आंसर एक्चुअली। सो वन थिंग दैट यू मेंशन्ड इज कि जो चाइना है ओवरऑल अगर हम देखें तो रिडेम्पशन काइंड ऑफ दे आर ट्राइंग टू रिडीम अपनी जो उनकी दिमाग में as you said they thought कि China is the center of the earth and they are the most important country for the entire civilization, और जो भी जैसे शायद सिमिलर थॉट्स इंडिया के भी हैं। इंडिया भी अगर अपने बारे में सोचे तो इंडिया यही सोचते हैं कि हम एक टाइम पे सोने की चिड़िया थे, सारे जो हर चीज हमसे चुरा के लेके गई है। तो देखा जाए तो इंडिया और चाइना सेम ड्रीम अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं और सेम टाइम से कोशिश कर रहे हैं। सो आई थिंक यू सेड चाइना न्यू चाइना इंट्रोडक्शन 1949 विद द कम्युनिस्ट पार्टी, 1947 इंडिया गेट्स इंडिपेंडेंस, फ्रॉम देयर ऑन, राइट? तो स्पेसिफिकली इफ आई आस्क यू अबाउट इंडिया एंड चाइना, बट अगर हम इस पैरेलल ट्रैजेक्टरी को देखें तो एक रास्ता है जो चाइना ने लिया है अपने आप को रिडीम करने के लिए, वापस से वहां पहुंचने के लिए जहां वो पहुंचेंगे। एक रास्ता इंडिया ने भी लिया है और इंडिया भी सुपर पावर बनना चाहता है। हम भी ये सोचते हैं कि ये जो सेंचुरी है ये इंडिया की सेंचुरी, अगले 20-25 साल इंडिया के हैं। तो आपकी अंडरस्टैंडिंग में हाउ आर दीज टू पैरेलल जर्नीज हैपनिंग and what is India doing differently? और at the same point of time why I am asking this question is कि इंडिया और चाइना क्योंकि दोनों सुपर पावर बनना चाहते हैं, दोनों को लगता है कि उनके रास्ते सही है, तो कहीं ना कहीं ये रास्ता तो आपस में काटेगा। it's certain that if two countries residing so nearby want to establish similar goals for themselves, तो कहीं ना कहीं तो they would cross each other, right? तो if you can just start from there and pick a little bit about कि इंडिया और चाइना के भी relationships, how has that been over the time? I'll just take a step back. अगर हम देखें तो 1947-48 में और उस दौरान काफी नेशंस, बहुत सारे नेशंस इंपीरियलिज्म से मुक्त हुए थे, उनको फ्रीडम मिला था, इंडिया उनमें से एक था। और थोड़ा हम हटके अगर देखें तो पाकिस्तान भी उसी वक्त आजाद हुआ था, और आजाद क्या, पाकिस्तान वाज बोर्न एक्चुअली, अब उनसे आजाद पाकिस्तान वाज बोर्न, एंड the state of Pakistan after it was born, it went a totally different, it took a little, quite a different trajectory, in comparison to India. And India, out of the many nations, 66 nations को उस वक्त फ्रीडम मिली थी 1945 के विश्व युद्ध के बाद में। उन 66 nations, उन 66 countries में around 50% of those countries have either been unstable or have run into military dictatorship or have had a very difficult run because of the civil war or some other reason. पाकिस्तान का जिक्र मैंने इसलिए किया क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान also started at the same time, और इस रीजन में 3 countries, पहले हम इंडिया पाकिस्तान की बात करते थे, आजकल चाइना की बात करते हैं, लेकिन 3 countries, if you look at it, started their journey as a modern independent nation around the same time. Pakistan has fallen by the wayside. Pakistan took the route of military dictatorship in 1958 जब अयूब खान ने power claim किया था, and he came to power. So 1958 से Pakistan has been topsy-turvy. China went on a very consistent route of communism, which was diametrically opposite to what India took on, which was a very consistent democracy. The reason why I said Pakistan is Pakistan started as a democratic nation, but went down the route of military dictatorship, and it has continued to be going astray. China and India took 2 different routes, and diametrically opposite. Agar hum dekhen to India became strong as a democracy in the first 20 years, first 25 years. उनकी institutions हमारे यहाँ पे बनी हैं, हमारा जो एक spirit of democracy बना है, जो आज भी हमारे, we have multi-party system, we have political parties, we have federalism, we have different states. तो इंडिया की जो democracy है वो तब से बनती गई है. It has had different forms, it has had it has had its challenges during emergency and
later on. And अब जाकर के इंडिया पिछले इतने सालों में has consistently remained a very strong democracy. अगर चाइना का देखें तो China has also undergone changes. China started by being a very rigid communist nation, and it wanted to be a regional power. अब मैं आपको सुपर पावर का जो क्वेश्चन है उसमें भी उसको भी एड्रेस करता हूँ कि चाइना wanted to be a regional power right from the start. जब ये नेशंस आजाद हुई तो इन नेशंस में जवाहरलाल नेहरू जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे, he was assuming the role of the leader of the new world. इसको न्यू वर्ल्ड कहा जाता था. तो वहां पे चाइना और इंडिया की पहले थोड़ी राइवलरी शुरू, because China thought कि we are also part of the new world and we have broken the shackles of imperialism. लेकिन इंडिया अभी भी कंटिन्यू कर रहा है क्योंकि इंडिया के जो ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस है वो सब वैसे कंटिन्यू कर रहा है. हमने तो हमारे ओल्ड कल्चरल या चाइनीज वैल्यूज को रखा हुआ है. सो वी आर द न्यू वर्ल्ड एंड दे वर इंसिस्टिंग दैट. एंड ऑफ कोर्स दैट वाज मोर ऑफ द पॉलिटिकल राइवलरी, द cultural rivalry. There were other issues which was mainly driven by the land dispute, by the border dispute, जिसको हम जानते हैं कि China claims some parts of India and also believes that India, states like Arunachal Pradesh was part of China, or China also believed at that time that Sikkim was, they had their eyes on Sikkim. So जो land का जो बॉर्डर का जो क्लेम था चाइना का, वो चाइना के दूसरे नेशंस के साथ भी था, इंडिया के साथ भी था. अब चाइना का एम जो था कि यहाँ पे रीजनल पावर बनना, जो मैंने बताया कि द लीडर ऑफ द न्यू वर्ल्ड व्हिच इंडिया हैड अज्यूम्ड बाय वर्च्यू ऑफ पंडित नेहरू स्टेटस as a global leader. China was going through the civil war that time when Nehru was actually interacting with the British rulers and the others. So Nehru got a lot of eyeballs and a lot of international exposure. तो चाइना का राइवलरी वहां पर भी था. और उस वक्त चाइना और इंडिया की जो राइवलरी थी वो रीजनल लेवल पे थी. आज जो राइवलरी है, और we have traversed the history. We have had the war of 1962, the battles of 1967, और उसके बाद में 50 साल इंडिया और चाइना के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुई, बारिंग 1975 जहां पे 4 इंडियन सोल्जर्स एक पेट्रोल में मारे गए थे. बट देयर वाज नो कॉन्फ्लिक्ट अंटिल 2020. तो अगर हम देखें अब 2020 में भी देखें तो इट वाज आल्सो चाइना's insecurity that India is rising, and India is rising in the region where China otherwise does not have a rival of this nature. Though I must say that as a nation, China is far bigger, has a far greater force in terms of numbers and technological capability, etc. Far bigger economy, far greater landmass, bigger landmass. At the same time, China, because Chinese internal composition जो है, it has progressed on a platform जहां पे आपकी कोई opposition नहीं होनी चाहिए. उस तरीके से चाइना का internal system हुआ है. अब वो external, जब वो when they're dealing in the external environment, in the international environment, they believe that that is how they should run that ecosystem as well. और वहां पे, given the increasing influence of India as a market, as an economic force, as a military force, as a political force, China had felt uncomfortable. Yes, India is not a superpower. But India is certainly a regional power. और इस region में अगर चाइना का दबदबा बनाना है तो the one way they could possibly do that is to create a perception where they are seen to be dominating India. क्योंकि आज के युग में, except for अगर हम देखें Russia-Ukraine war is an anomaly, there are other wars that would take place in other places. But generally, if you look at whether India and China would go to war, does it work for China? Well, China's sights are set to be a superpower. And if it were to take on India in a war, it would suffer in terms of being set back, being set back by many years. So I think that is what they also do understand. And therefore, posturing becomes important.
perception becomes important. और चाइना और इंडिया के बीच में 3 C's हैं: कॉन्फ्लिक्ट, कोऑपरेशन और कंपटीशन। अभी कॉन्फ्लिक्ट तो हम जानते ही हैं, वो हो रहा है, हुआ है। कंपटीशन होता है, whether it's economy, trade, there is a competition, and competition or conflict go side by side, Correct. alongside each other. Sometimes, if the competition is too intense, it can boil down to a conflict, or if the conflict is too intense, it will show in the competition, like the trade bans, the other things that could happen. Cooperation, when I talk of cooperation, अभी आप देख रहे हैं कई जगह चाइना बोल रहा है कि India is we want good relations, we want good bilateral relations with India, etc. They are also driven by several other things. Cooperation में ये है कि अभी देखिए पाकिस्तान का इकोनॉमिक हालत खराब है, तो चाइना समझता है कि इस रीजन में to depend on a country which is itself not being able to run itself is also fraught with its own consequences. And it also understands that that India is a nation which it can, if it manages its relations well here, it will also possibly be beneficial for them when they in keeping India away from the US and giving a Chinese perception, that is possibly something that China would think, that keeping India away from the US is in their best interest, rather than driving India into the US camp. So that those factors, kitni soch nahi hai, kya factors dominate karte, will determine the dimension of cooperation, which in the 3 C's has been less, if you look at the history, has been lesser than the other C's. Yeah. And that is something that I see. But over the years, it has been a relationship which is a relationship of tentative peace and occasional conflict. So explicitly, like I have some questions about your answer. तो अगर हम देखें इंडिया और चाइना, आपने 2 चीजों की बात की. If I basically sum it up, what you said, one is the political belief and the narrative belief कि okay, चाइना भी सुपर पावर बनना चाहता है, इंडिया भी सुपर पावर बनना चाहता है. चाइना ये देखता है कि अगर हमें इस रीजन में सुपर पावर बनना है तो इंडिया को हमें डोमिनेट करना पड़ेगा, हमें ऐसा दिखाना पड़ेगा कि चाइना को दिखाना पड़ेगा कि वो इंडिया को डोमिनेट कर सकते हैं, और इंडिया को ये दिखाना पड़ेगा कि वो सॉवरेनली आराम से चाइना को डिफेंसिव पे रख सकता है एट ऑल पॉइंट ऑफ टाइम, राइट. बट जो दूसरी चीज आपने बात की, विच इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग and something to understand, is कि China claims कि India के कुछ part are integral part of China, like China should basically have hold of them, whether it is Sikkim, as you mentioned, Arunachal Pradesh, or anyways, I think north east side में China हर जगह पे entry करने का try करता रहता है constantly. तो just to understand, I think I want to come to 1962 from here, because this is the first time जब हम एक बड़ी battle में जाते हैं चाइना के साथ, और काफी problem होती है उस टाइम पे. But from the same perspective, if you can just make us understand ki from the map perspective, just from the boundary perspective, why is China viewing ki northeast ka bahut sara part China ka hai, right? And how has that led to the conflict of, let's say, 1962, which happened, where probably India suffered a loss from China? देखिए, उसमें ऐसा है कि 1962 war was driven by the Chinese. उसके पहले अगर हम कुछ साल उसके जो the history pertaining to the years of 50s अगर देखें तो India and China generally had good relations in the early 50s, but the Chinese plans were always there. The Chinese plans were what? अभी अगर हम चाइना को देखें कि China was not India's neighbor. India's neighbor was Tibet. लेकिन चाइना ने आकर के 1950 में टिबेट को चाइना ने कैप्चर किया, इन्वेड किया, और टिबेट पे आकर के जब चाइनीज फोर्सेस बैठे तो चाइना became India's immediate neighbor. After that, China believed, and Chinese beliefs are not based on any international, are not aligned many times with the international belief systems. It is driven by their own beliefs. The Chinese believe this. The Chinese think that this is the boundary. The Chinese believe that is the land. So
जो उनकी जो सोच थी कि अरुणाचल में, Leh Ladakh side में, and along several areas, tracts of land, etc., belong to China, was a Chinese belief. And China, so all of those reasons were there. They were the India-China, Sino-Indian dispute-related reasons, which China believed that that land was theirs, and therefore they must come and occupy that. That was a Chinese belief. Sorry to cut you. So when you say belief, you mean कि उसके पीछे कोई भी लॉजिक नहीं है, उसके पीछे कोई भी ऐसे रीजंस नहीं है कि मे बी फॉर एग्जांपल इफ इंडिया बिलीव्स कि पाकिस्तान इंडिया का होना चाहिए, सो द बिलीफ कैन आल्सो कम फ्रॉम द फैक्ट कि पाकिस्तान वाज वंस इंडियाज पार्ट. Britishers led to creating a new country, although we don't believe that, but let's say if India believes that. But चाइना अगर किसी पार्ट पे, किसी स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया पे अपना क्लेम मानता है, तो उसके पीछे का कोई भी मतलब देयर इज नो लॉजिक टू इट, इट्स जस्ट अ बिलीफ. No, so there is, you see, we have to go back to, specific nuances of history. जो 1914 में एक agreement साइन हुई थी. तो जब वो agreement साइन हुई थी, चाइना में, the Chinese India Sino-Indian boundary is 3,888 kilometers to be precise. और इसके 3 sectors, northern sector, middle sector, and eastern sector. So eastern sector में McMahon line है, और फिर आपके Johnson-Ardagh line है. These are the lines that separate India and China. These are the so ये जो agreement 1914 में साइन हुई थी between India, so उसमें क्या हुआ था कि, as I said, Tibet was India's neighbor at that time. So Tibet से emissary आए थे, एक Chinese emissary भी आए थे, but वो साइन जब हुई थी, tripartite agreement was signed in 1914, which demarcated the boundaries. I'm just giving you a little in brief that the China believes, to your question, so China believes that these boundaries were a result of the imperial rule, were decided during the imperial rule, and therefore they do not agree to them. And they believe that तो उस हिसाब से they don't believe that those are lines that they agree to, and their understanding, their perception, therefore, is different from India's perception, and their understanding of the Sino-Indian boundary is further south of where India's understanding is. So south बोलेंगे तो आप India की territory में आ रहे हैं. So their perception is driven by that, and their claim was that you believe in what the imperial regime during the Raj, during the British times, those were decided, and that is what India believes in, which China does not agree to, which is what the basic disagreement had been from the Chinese side. अब क्या हुआ? अब उसके बाद में relation, China started making incursions. अब incursions किया आपने तो इंडिया में पार्लियामेंट में उसके बारे में चर्चा हुई. 1950s में चाइना ने अक्साई चीन के वहां पे रोड्स बनाने शुरू कर दिए. अब जब शुरू कर दिए थे तो India was caught by surprise, because, as I said, India's focus was not as much on national security at that time in the early years, for the right or the wrong reasons, and I would think for the wrong reasons, because India did not actually focus on its borders, its forward areas, in say the areas of Aksai Chin wherein China was making roads. It is only by surprise that Prime Minister Nehru was once, he was surprised when he was told that the Chinese had made roads in Aksai Chin, which to him was surprise, because there was no, the earlier intelligence which had come had been brushed aside, and therefore as I said, India did not have a proper understanding of its foreign policy priorities. Also, I must, we can always sit in 2023 and do a post-mortem, but it is also, let's also understand that India was a new nation as well. India was also learning a lot of things, and I think India made mistakes early on. Should India have made the mistakes? No. Whether India made the mistakes knowingly? No. I think there were mistakes because India's perceptions, India's understanding of its immediate neighborhood was wrong. And also, we did not have a sort of focused and committed intelligence services. We had an IT, Intelligence Bureau,
which was headed by a gentleman called Malik. अब वो मलिक साहब जो बोलते थे प्राइम मिनिस्टर को, वही वो मतलब that used to become the gospel, and we did not have adequate understanding of the fact that the Chinese were making roads. And जब तक हमारे पास इंटेलिजेंस आई तो तब तक mid 1950s में चीनी रोड बना चुके थे. So the Chinese never believed that agreements. They never believed in staying true to agreements. So Panchsheel जब इंडिया चाइना के बीच में जब पीस ट्रीटी हुई थी, उस वक्त चाइना यहाँ पे पीस ट्रीटी साइन कर रहे थे और वहाँ पे रोड्स बना रहे थे इंडियन टेरिटरी में अक्सर चीन. And India was not aware of it. So India's understanding and foreign relations in that period was based on transparency. But India should have understood better that China was not really meaning what they were saying at the agreements, because China was doing something else inside India's territory. तो वहाँ पे वो सब disagreement शुरू हुई. China incursion करके हर जगह 1954 में एक बराहोती करके जगह थी, वहां पे चाइनीज फोर्सेस केम एंड सराउंडेड एन इंडियन पोस्ट. तो कई ऐसे छोटे मोटे इंसिडेंट होते गए और इंडियाज देयर वाज अ डिस्कनेक्ट बिटवीन द पॉलिटिकल लीडरशिप एंड द मिलिट्री लीडरशिप. किस तरीके का डिस्कनेक्ट? 1959 में एक एक्सरसाइज, एक जो सर्वे रिसर्च एक्सरसाइज किया गया, उसका नाम था लाल किला. और वो लाल किला एक्सरसाइज में ये उसका आउटकम ये था कि इंडिया डज नॉट हैव एडिक्वेट प्रिपरेशंस, इक्विपमेंट, मैन पावर और ट्रेनिंग एंड कैपेबिलिटी टू टेक ऑन चाइना इन अ फुल स्केल वॉर. दिस वाज द बॉटम लाइन. बट इस आउटकम जो रिपोर्ट थी उसकी जो आउटकम थी, वो हमारे neither the political leadership nor the military leadership took cognizance of. The political leadership did not take cognizance of it. The military leadership did not have the spine to stand up to the political leadership of that time. It's a fact of life. And 1959 में जो रिपोर्ट तैयार की गई थी जनरल थोराट द्वारा, वो उस वक्त के जो डिफेंस मिनिस्टर थे कृष्ण मेनन साहब ने वो प्राइम मिनिस्टर नेहरू के सामने पेश नहीं करी. और द प्राइम मिनिस्टर वाज unaware of how the defense minister, Mr. Krishna Menon, was operating or thinking or what he was doing. I think there was a huge disconnect. Then defense minister, Mr. Krishna Menon, did not, he used to override the military thinking, the military leadership. The military leadership did not stand up to the political leadership where it thought that they were going wrong. And the result was the debacle of 1962. और जिस वॉर में इंडिया की सेटबैक्स हुई, जहां पे तो ये अगर हम 1962 का युद्ध देखें तो ये युद्ध एक पॉलिटिकल फेलियर था और ये मिलिट्री लीडरशिप का भी फेलियर था. लेकिन इस युद्ध में जहां पर भी इंडियन सोल्जर खड़ा होकर के लड़ा है, जहां पर इंडियन फोर्सेस लोकल कॉन्फ्लिक्ट्स में खड़े होकर लड़े हैं, वहां पे चीनी फोर्सेस को उन्होंने रोका है. They have managed to stop the Chinese. It is the model thinking and the leadership. I wouldn't blame people for the inability to defend. I would blame people for the inability to admit that they were not ready. I would blame people in terms of lacking the ability to be truthful to themselves. 1959 की आपकी रिपोर्ट थी जिसके तहत ये माना गया कि India was not ready. But the fact is you were not truthful to yourself. And given that India में military budgets were different, were far less, the equipment was not adequate, the people were not trained, I think it was cruel. It was absolutely brutal and cruel to expect the soldier to be fighting at sub-zero temperatures in frigid zones. और उस जगह पे उन पहाड़ियों पे सोल्जर्स को भेज करके उनसे एक्सपेक्ट करना कि they would really survive and fight was absolutely cruel. Not understanding the fact that we needed to have better capability is something that I would lay a lot of blame on the political and military leadership for committing the folly, despite knowing that, despite being aware of it. And I think it was also a battle of egos.
which led to India's downfall at that time. लेकिन उसके बाद India had a change, and of course 1962 की जो bright side है वो ये थी कि उसके बाद में जो 1965 की लड़ाई और 1967 में जो नाथू ला चोला की जो लड़ाइयाँ थी और 1971 में जो युद्ध था पाकिस्तान के विरुद्ध, उसमें हमने ये देखा कि जो the political and the military leadership, the military leadership was given the autonomy to function and to run a war as a military leadership should. It's not political. The political leadership has a say, but the military leadership must run its war on the battlefield. Okay, so sir, specifically like two short points on 1962 अगर हम बात करें तो one I want to understand कि जब ये 1962 की लड़ाई हुई तो obviously we were not ready, आपने वो बताया, लेकिन जब ये लड़ाई हुई were we caught by surprise या did we expect कि ये लड़ाई हो सकती है? This would be my first question. And second thing that I want to understand is कि जब ये लड़ाई हो रही थी Pakistan has always been hostile. Like since their intention was clear, and as you said कि 1958 में जब वो army controlled ही थे, उसके बाद से काफी ज्यादा. When this war was happening, what was Pakistan doing at that point of time? Because logically देखा जाए अगर आज की situation के हिसाब से, when India is weak and someone is able to dominate, Pakistan would definitely want to interfere and kind of get inside जहां से भी वो आ पाए. So very short, if you can just explain ki was India caught by surprise and what was geopolitically Pakistan doing at that point of time? See, Pakistan had also come out when एक छोटी सी घटना है जो घटी थी 1959-60 के आसपास, which very few people know of. Pakistan and China also had a dispute. Pakistan had also had a dispute with China. उसके बाद में पाकिस्तान ने एक छोटी सी एक जमीन पाकिस्तान की जो चाइना को सौंप दी 1963 में, वो बाद में हुई. 1959-60 में पाकिस्तान की जब चाइना से डिस्प्यूट हुई तो अयूब खान पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे. तो he flew when he was flying back, and he was flying back from East Pakistan, which is now Bangladesh, into West Pakistan. He stopped over at Delhi. He made a proposal that India and Pakistan should have a joint front against China, because we have more in common. But that proposal was turned down by India because tacitly उसके अंदर एक अयूब खान की शर्त ये भी थी कि हम इसको तो करेंगे, we can put up a joint front in case you agree on the Kashmir issue. So which India was not willing to, and that died its own natural death. उसके बाद में जब 1962 की लड़ाई हुई, so the US was also उस वक्त John F. Kennedy की सरकार थी, and he was pro-India, and US also had a relationship with Pakistan, and it was supplying military equipment and planes to Pakistan. So that was also a reason why Pakistan was reined in, और पाकिस्तान की उस वक्त इतनी काबिलियत नहीं थी कि वो they will launch into opening another front. They had Ayub Khan, they had a very anti-India stance, but they were not ready. और वो ready हुए 3 साल बाद. और वो भी मैं बताता हूँ कैसे ready हुए, क्योंकि 1962 में जब चीनी भारत का युद्ध हुआ, and you asked me another question whether India was surprised. Well, I think India had adopted a forward policy, a policy where they would occupy defenses, आगे जा करके forward patrolling करेंगे. तो उसके वजह से चाइना के साथ में काफी disagreements हुए. China believed that India was sending its forces ahead of its defenses, and some of these things were leading towards a conflict. Or India was surprised because if you look at Pandit Nehru's his responses on his reactions, he didn't expect China to actually launch into a full-scale war, which China did.
But having said that, I think I go back to 1959-60 and India's assessment of its own capabilities, of its own forces, etc. And I think, and I go back to the fact that India had a disconnect between its political leadership and the military leadership, or taking an aggressive posture without having Being ready. assessed what would you do in case of a war was a big folly. And वो कहते हैं कि उसकी सिल्वर हर चीज की सिल्वर लाइनिंग होती है. तो 1962 का सिल्वर लाइनिंग ये थी कि 1965 में जब इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध हुआ, वी हैड लर्नड आवर लेसन्स. और लेसन्स क्या थी? एक तो स्ट्रेटेजिकली ये लेसन था कि जो चौहान साहब आए एज अ डिफेंस मिनिस्टर, ही लेड द मिलिट्री, द आर्मी फंक्शन, जो कृष्ण मेनन साहब ने नहीं किया था. एंड ही वाज कॉन्स्टेंटली ओवरराइडिंग, रेल रोडिंग द आर्मी, डिसाइडिंग कि यार हमारे ट्रूप्स यहाँ आगे जाएंगे, चाइनीज ट्रूप्स ऐसे आएंगे तो हम ऐसे करेंगे. दोस वर, he was not trained to be so, but he was running the show and overriding the general's decisions. और 1965 के और 62 और 65 के बीच में क्या हुआ कि इंडिया ने भी, after the setbacks of 1962, India raised extra divisions, army divisions, सोवियत के साथ में कॉन्ट्रैक्ट साइन की गई और वहां से सोवियत यूनियन से equipment, weapons, aircraft. So those were part of our laundry list of defense budget that came in, which made India strong. Because it made India strong, पाकिस्तान में अयूब खान साहब ने सोचा कि भाई अब इंडिया तो स्ट्रांग हो रही है, अब हमें कुछ करना चाहिए, अदरवाइज विल बी टू लेट टू मेक दैट ड्राइव इनटू कश्मीर और टेक कश्मीर, तो हम लेट हो जाएंगे. और उस वक्त जो पाकिस्तान की इकोनॉमी थी, Pakistan's economy was doing very well as compared to Indian economy. Pakistan was known as the Asian tiger. They were the original Asian tigers. लेकिन पाकिस्तान का जो डाउनफॉल है वो 1965 से शुरू होता है, और वो इसीलिए शुरू होता है क्योंकि बिकॉज ऑफ देयर ऑब्सेशन विद कश्मीर. और तब तक 1948 में पाकिस्तानी फोर्सेस कबालियां आए थे एंड ऑल दैट हैड हैपेंड, बट उसके बाद में पाकिस्तान had focused on building their economy, but they were spending a lot on the military. And 1962 के बाद में 1963-64, 10% of their budget and even more was being spent in the I think 10% on specific acquisition of specific weapons Pakistan had spent money on. And every 10th Pakistani was being recruited into the armed forces, into the military. So Pakistan was gradually militarizing their own country, little realizing that it will come back to bite them in due course of time. ठीक है. So sir, थोड़ा सा let's move the narrative. तो I think 1962 is clear. Then of course, as you said, कि बहुत सारे changes हुए इंडिया में, which of course you are mentioning, there are some political changes that happened. Autonomous जो power है आर्मी को या मिलिट्री को स्पेसिफिकली, वो दी गई, and the politicians were not controlling the narrative. Then the army was basically controlling, doing their job. And of course, आज भी जैसे हम देखते हैं, I think it would be the same thing, wherein they respect, and obviously they respect the political side of it, but at the end of the day, जो मिलिट्री है, जो ऑफिशियल्स है, उनको पावर है, आपको जिस तरीके से डील करनी है सिचुएशन आप डील कर सकते हैं, स्पेसिफिकली ऑन द ग्राउंड. But from there on comes 1967, which I think we should touch upon before moving ahead to the current narrative is, and I think you have written a book also about that year and that war that happened, जो बहुत कम लोगों को पता है. But explicitly, if you can talk a little bit about that, what happened in 1967, from 1962 to 1967, and then जो इंडिया और चाइना की लड़ाई होती है, which is a forgotten war, as you mentioned in even your book title says, it's a Watershed 1967 forgotten victory of India over China, right? What happened there? Why was it forgotten? And how uski wajah se, how has that changed the narrative of last, whatever, 50 more years that have gone by? जी. So 67, जब ये 65 का युद्ध हुआ, तो my book also starts with 1965. और 65 में जब ये इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था पश्चिमी फ्रंट में, तब एक ऐसा एक मूव चाइना कर रहा था जिसके बारे में हमें ज्यादा पता नहीं है. लेकिन 1965 में 1965 में जब पाकिस्तान और इंडिया वेस्टर्न फ्रंट में युद्ध में छिड़े हुए थे, तब ईस्टर्न फ्रंट में आपके सिक्किम जो था वो इंडिया का
हिस्सा नहीं था, वो एक एसोसिएट स्टेट हुआ करता था। तो सिक्किम में पाकिस्तान, चाइना ने उस वक्त अपने फोर्सेस तैनात किए थे सिक्किम के ऑपोजिट तिब्बत में। 1950 में चाइना तिब्बत में आ चुका था। तो 65 में जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच युद्ध चल रहा था, तब चीनी फोर्सेस सिक्किम के ऑपोजिट आकर के बैठे थे और प्रेशराइज कर रहे थे। वो किस लिए? क्योंकि एक, और मैं बुक में ज्यादा डिटेल में है तो मैं उस डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं ये बताऊंगा कि 1965 में जब हम जानते हैं इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, 1965 में चाइना भी इंडिया को डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा था, साइकोलॉजिकल प्रेशर अप्लाई कर रहा था सिक्किम में, क्योंकि सिक्किम हमारा हिस्सा नहीं था, लेकिन डिफेंस और फाइनेंस हम उसका देखते थे, हम इंडिया टू हैंडल इट्स डिफेंस और फाइनेंस, एंड सिक्किम में इंडिया के फोर्सेस थे। और चाइना साइकोलॉजिकल डोमिनेशन किस तरीके से अप्लाई करना चाह रहा था कि सिक्किम में जो बॉर्डर आउटपोस्ट थे, दो बॉर्डर आउटपोस्ट थे, जेलेपला और नाथुला। चीनी फोर्सेस ने बोला कि इंडियन फोर्सेस वहां से हट जाए, पीछे चले जाए। वो इंडियन टेरिटरी थे लेकिन प्रेशर डाल रहे थे। अब वो देखिए 1965 जो है, इट वाज ओनली, दे वर ओनली 3 years फ्रॉम 1962, तो साइकोलॉजिकली इंडिया वाज आल्सो वेरी मच स्कार्ड बाय 1962। द पॉलिटिकल लीडरशिप हैड चेंज्ड। लाल बहादुर शास्त्री वाज द प्राइम मिनिस्टर, बट एक साइकोलॉजिकली इंडिया हैड बीन स्कार्ड बाय द सेटबैक्स इन 1962, नंबर 1। नंबर 2, जब ये पाकिस्तान के विरुद्ध युद्ध चल रहा था, तो इंडिया डिड नॉट वांट टू आल्सो ओपन अप अनदर फ्रंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट विद चाइना ऑन द अदर साइड, which is why India wanted to play it down. लेकिन ये था कि चीनी इसको समझते थे, एंड चीनी जानते थे कि अगर इंडिया को पुश किया जाए, साइकोलॉजिकली पीछे कर दिया जाए, चाइना का ये भी प्लान था कि सिक्किम में आके ऑक्यूपाई करे और पाकिस्तानी फोर्सेस कश्मीर में आए। किस तरीके से क्या प्लान था और सीआईए किस तरीके से इन्वॉल्व था, लैंगली जो यूएस में सीआईए का हेडक्वार्टर्स था वो कैसे इन्वॉल्व था, सीआईए का दिल्ली विंग कैसे काम कर रहा था, ये सारा कुछ मेरे बुक में है। तो यू कैन रीड, आई थिंक देयर इज अ लॉट मोर इन ग्रेटर डिटेल दैट यू विल गेट देयर। तो ये प्लान था चाइना का कि चाइना सिक्किम में आए, पाकिस्तान कश्मीर में आए, और पुश इंडिया टू अक्रॉस टू सिट अक्रॉस द टेबल एंड बार्टर कि भाई हम सिक्किम से वापस चले जाएंगे चाइना, आप कश्मीर पाकिस्तान को दे दीजिए। लेकिन ये जो प्लान था ये एक्चुअली फ्रक्टिफाई नहीं हुआ, एग्जीक्यूट नहीं हुआ, इस नतीजे पे नहीं पहुंचे, क्योंकि पाकिस्तान का जो प्लान था टू कम टू कश्मीर थ्रू ऑफ जिब्राल्टर, जो कश्मीर में आकर के इंटरनली इंसर्जेंट फोर्सेस यूज करके भड़काना और मेन आर्मी उसके बाद में ले आना, एक ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम कहते थे उसको, तो वो करना पाकिस्तान के हित में नहीं हुआ, क्योंकि पाकिस्तान कुड नॉट सक्सीड। इंस्टेड इंडिया वेंट वेरी क्लोज टू लाहौर। सो बिकॉज पाकिस्तान couldn't succeed, China couldn't execute the Sikkim plan of coming in. पर चाइना ने जब इंडिया को पुश किया था जेलेपला और नाथुला के बॉर्डर आउटपोस्ट से वापस जाने के लिए, तो जेलेपला से तो इंडिया वापस चला गया। वहां पे 27 आर्मी डिवीजन जो है उसके अंडर में होता था, तो वहां पे जो फोर्सेस थी इंडिया की वो जेलेपला से पीछे हट गई। लेकिन नाथुला में जो 17 डिवीजन के अंडर होता था, वहां पे वो होता था, वो इलाका होता था, एक जनरल सगत सिंह इंडिया के थे, मेजर जनरल सगत सिंह, दैट टाइम मेजर जनरल, उनके अंडर में उन्होंने ही रिफ्यूज्ड टू मूव बैक फ्रॉम नाथुला, ही रिफ्यूज्ड टू मूव हिज फोर्सेस फ्रॉम नाथुला, एंड he took on his own superior officers. He said, "No, I will not agree to do that." He took on the Chinese. So that started a friction, because China was psychologically kind of pushed back. अरे ये तो हम तो माने नहीं। And this was 1965. 65. तो that started. उसके बाद में क्या हुआ? China was becoming stronger. It became nuclear power. All of that happened. डोकलम जो हम 2017 में देख रहे थे, वो 1966 में पहली बार हुआ था। तो डोकलम में चीनी फोर्सेस आ गए। They thought, अब 66 में, 65 के बाद की बात कर रहा हूँ, 66 में डोकलम में जब चीनी फोर्सेस आए थे, इंडिया had a new prime minister. Lal Bahadur Shastri had died in Tashkent. We know that after the 1965 war. 66 में Indira Gandhi was the prime minister, new prime minister, lesser seats she had. I don't want to go into the details, but she found it very difficult to really become a prime minister, become the leader of her own party. And a lot of issues she had faced with a lot of bigger leaders, etc. So China understood that this was
a woman who had come and, young woman would become prime minister, didn't have the kind of political heft that Jawaharlal Nehru had or Lal Bahadur Shastri had. This is a good time. So again, China tried to play on that. Doklam mein aake baithe. Mrs. Indira Gandhi took that adversity. वो कहते हैं ना, adversity को opportunity में create करना. So she was good at that. She turned that adversity into an opportunity by raising a very aggressive posture against China when China came to Doklam. उसके बाद 1966 एंड 67 के शुरू में चाइना ने 2 इंडिया के डिप्लोमेट से उनको बंदी बना दिया. उनको बोला कि भाई आप लोग स्पाई कर रहे थे, because they were just taking pictures in some place. They were posted there in Beijing. उसमें पीकिंग बोलते थे जय. तो वहां पे पिक्चर ले रहे थे कैमरा से, उनको पकड़ के बंद कर दिया. अब मिसेस इंदिरा गांधी ने यहाँ पे क्या किया? शी डिटेन्ड or put under arrest the entire Chinese consulate. और बोला कि भाई यहाँ पे the whole consulate is now detained. So now when that happens, 2 nations can go very close to a war, because वो आपने consulate ही बंद कर दिया, उसको पूरा ही मतलब that is very different from the norms. But so what China did, Mrs. Gandhi would do 2 steps ahead, go 2 steps ahead. So that's how things were slowly rolling down a slippery slope. और 1967 में जब ये डिप्लोमेट की टसल हुई और चाइनीज ने क्या किया, उसके बाद में चाइना ने बोला कि ठीक है हम अपने डिप्लोमेट्स वापस बुला लेंगे. 2 डिप्लोमेट्स को चोटें लग गई थी यहाँ पे दिल्ली में, बिकॉज डेमोन्स्ट्रेटर्स हैड कम फ्रॉम आउटसाइड एंड had thrown stones and all of that had happened. So फर्स्ट सेक्रेटरी, सेकंड सेक्रेटरी उनको लग गई थी चाइनीज फोर्स, चाइनीज डिप्लोमेट्स को, तो और कुछ लोगों को और लग गई. तो फिर इंडिया ने बोला कि भाई आप हमारे डिप्लोमेट्स छोड़ दीजिए. तो those 2 diplomats underwent a public trial in China और उनको फिर वहां से हांगकांग भेज दिया गया. But a counter pressure was put on China. Chinese government ने एक plane भेजी इंडिया में to take their diplomats back. So Mrs. Gandhi said, we are not allowing refueling facilities for your plane. So it was कि अच्छा अपना तेल खुद लेके आइए. And those kind of things happened, which were pushing India and China on the brink of a conflict, which finally would take place in September 1967. 2 conflict हुए, Nathu La में पहले और फिर Chola में. What happened, how it happened, the book has almost a day-to-day detail, minute-to-minute detail. आंखों देखा हाल है किताब में. और इसको to put that together, I spoke with multiple sources. I looked at reports, documents. I spoke with veterans, diplomats, analysts, journalists of that time. And it's an incredible account of what happened in those 2 battles of Nathu La and Chola, जिसमें Indian forces got the better of China. और सिर्फ यही नहीं. What happened was, because of those 2 consecutive victories, it changed the narrative. तब तक narrative क्या थी कि China would dominate this subcontinent, this region. अब 1967 की जो conflict थी, जो 2 battles थे, they changed the narrative in the region in India's favor. They wrested the psychological narrative from China into India's favor. That is why 1967 was a political and military watershed, and a historical one. क्योंकि 1967 के बाद में 50 साल जो है नाथुला चोला के विक्ट्रीज के बाद में 50 साल, more than 50 years, 53 years तक, 53 साल तक इंडिया और चाइना कोई कॉन्फ्लिक्ट में गए नहीं, कोई कहीं लड़ाई नहीं हुई, except for 2020 which is a skirmish which happened. But नाथुला और चोला के बाद में कभी नहीं. नाथुला और चोला में around 700 to 800 people died, but nobody spoke about that. It was forgotten. It was forgotten by historians. अगर जब मैं किताब लिख रहा था, जब मैंने लोगों से, you'll be surprised, ताज्जुब होगा आपको सुनकर के कि even in the armed forces people were not aware, because it was conveniently shelved. It was always called a skirmish, but I prefer to call it the Nathula Chola battles, because वहाँ पे 800 लोग, 700 लोगों की डेथ हुई. हमारे कई जो है सोल्जर्स वहाँ पे मारे गए.
and they fought bravely, those brave hearts, and it will be doing disservice to them if we were to shelve those two conflicts or call them mere skirmishes when they were actually battles. So we'll jump a narrative in the interest of the time. I think 1967 is absolutely clear, but जो आजकल की यूथ है, people like me, who probably early 30s, people in early 20s, जो वो चाइना को देख रहे हैं, they have not seen a battle with China, right? But एक बहुत ही बड़ा narrative बन रहा है, specifically, since 2017-18 onwards, कि there's a chance that India and China might go into a war and something wrong might happen. So rather than just talking about the war and the possibility, which I think we would do at the end of, when we conclude, but what I want to understand कि अगर हम present situation की बात करें, when I say present, I don't mean 2023, let's say last 5-6 years की अगर हम बात करें, तो India or China against each other, where do they stand? Secondly, from a geopolitical standpoint, how is the world looking at both India and China? Or मतलब अगर हमें measure करना हो perception wise, right? Who is basically heading those perceptions from a world perspective अगर हम देखें तो? See, India and China 1967 के बाद में 4 decades तक they went through a lot of different things. 1993 में there were agreements signed. There were agreements signed जिसके तहत India-China relations would be governed. 2003-2006 में जो कुछ और agreements signed हुए जिसके तहत India and China, how they would sort of conduct themselves at along the border, along the line of actual control, वो सब decide हुई. और हमारे मतलब इंडिया और चाइना के बीच में स्टैंड ऑफ्स उतने नहीं हुए इन 3-4 दशकों में जो 1967 के बाद, till Xi Jinping came to power in 2013. और Xi Jinping came to power in 2013, और उसके पहले 1967 के बाद में 1986-87 में सुंदरवंशु में इंडिया और चाइना के बीच में स्टैंड ऑफ हुआ था, और वो स्टैंड ऑफ में जनरल सुंदर जी उस वक्त इंडिया के चीफ आर्मी स्टाफ थे, और उन्होंने चाइनीज फोर्सेस को पीछे ढकेल दिया था. But that was without firing a bullet, and but it was a major standoff. और उसके बाद में कुछ खास स्टैंड ऑफ्स नहीं हुए, और 2013 में जब शी जिनपिंग पावर में आए उसके बाद में there have been more standoffs than in the previous 4 decades. अब वो इसलिए because that points to the answer to your question, is that India and China have become major powers. They are perceived as I said at the start of the interview, that China sees India as a rival and in the region, and China sees India as a country that will carry the flag of democracy, carry the flag of US influence, and China wants to dominate. China goes back to the 1960s operating narrative that that India is violating the border. और वही चीज जो है आज हम शी जिनपिंग को देखते हैं, जितना हम शी जिनपिंग को देखते हैं उतना ही हमें याद आता है कि how Mao Zedong would have worked at that or operated at that time. It's just that China today is more modern. It wants to be a superpower, and well, where are they? Will they go to war? Well, both. Let's see. Let's take a look at US and Ukraine and Russia. Ukraine was a nuclear power. We all know that, and we know that Ukraine signed a treaty wherein its nuclear capability was taken away, and we all know what has happened in the last couple of years between US and Russia and Ukraine. And but in this case, so that gives more credence to the theory. There are two nuclear neighbors, two nuclear powers will be deterred by the nuclear weapons that they have in terms of going to war. So that is one thing that I would talk about, that look, two nuclear neighbors possessing nuclear power, nuclear weapons, two neighbors possessing nuclear weapons, and a very strong economy. Do they have the is war an adventure worth taking for
to aspirational. You said, that India and China were both aspiring global powers. So two global powers, economic powers, growing political powers, military powers, and nuclear powers. Do they? How much do they benefit from going to war? Well, I don't see them going to. India and China have always been in a state of tentative peace. Tentative peace, occasional conflict. उसमें ये है कि आपकी peace रहेगी, tentative रहेगी, और वो जो है 3C की मैंने बात की थी, competition, conflict, cooperation. अगर हमारी conflict कम होती है, जो larger conflict की जो chances है, the disputes will remain. So there will be competition. Cooperation शायद कोई जगह में हो चाहे नहीं हो, लेकिन competition जरूर रहेगी. And I think India and China would move from a phase of conflict to a phase of competition. There would be the occasional nudge towards conflict. The question is, do India and China have the appetite for a larger conflict? I don't think so. Where the conflict will appear is the influence that each possesses in the region. अभी 1960s में, 50s में, 60s में, 70s में हम देखते थे कि रशिया, उस समय सोवियत यूनियन और यूएस में कॉन्फ्लिक्ट होता था, तो वो इन्फ्लुएंस के लिए होता था कि अच्छा, आप छोटे नेशन पे आपका दबदबा है या मेरा इन्फ्लुएंस. तो आई थिंक इंडिया एंड चाइना विल ग्रेजुअली गेट इनटू दैट. जब वो बड़े पावर हो जाते तो एक दूसरे के भिड़ करके इकोनॉमी खत्म करने के कोई मतलब, दैट्स लाइक you don't get into destruction. We haven't seen that in history unless you go to Second World War, and then you have a Hitler there, and it's a different phase. But if you see the Cold War, जो Cold War जो global stage पे था, अब वो मैं Cold War नहीं कहूँगा, I would call it tentative peace, occasional conflict. तो ये जो है इंडिया और चाइना के, अच्छा आपका मालदीव्स में आपने सत्ता पलट दी या श्रीलंका में वो कर दिया, और नेपाल में आप you're trying to politically influence them. So those things will continue. वो कहते हैं ना कि you have two dons and they want to have their influence in that neighborhood or this neighborhood. जो इलाके वाली लड़ाई है वो ज्यादा होगी. वो मेरे हिसाब से that is where we'll go, and that is a new age conflict. It's a conflict of narrative, conflict of perception, conflict of influence, conflict of posturing, and conflict of psychological pressure. China spends $10 billion. China spends $10 billion on on creating narratives, which is through universities, which is through political systems, which is through parliaments of different countries, जहाँ पे वो China के लिए बोले. China spends a lot of money on information warfare, जो IW warfare कहते हैं, information warfare, and that will increase a lot more, where they want to break down systems, they want to hack into systems, they will use cyber warfare. I see that as becoming an essential part of the conflict, where you do not know whether the conflict is there or not, but the conflict exists. So specifically, I think one or two last questions before we kind of conclude this. आपके आंसर से ही मैं कुछ क्वेश्चंस है मेरे. तो अभी बहुत ही पॉपुलर जो मीडिया में भी नैरेटिव्स रहते हैं. So one we know कि very recently China was into Sri Lanka doing a lot of things. बहुत जगह हम सुनते हैं they are buying ports. They're buying areas, whether it's Pakistan, whether it's a little bit of, not directly, but through Afghanistan. Then, of course, Taiwan एक ऐसी चीज है जहां पर इंडिया चुप रहा है शुरू से. मतलब, like India has not said कि okay, मतलब India recognizes Taiwan as part of China, but it still supports Taiwan, right? So बहुत सारे ऐसे countries हैं आसपास जिसमें China ने अपना दबदबा बढ़ाने का कोशिश किया है. And very surprising, one of the countries was Nepal very recently, जिसको हम ऐसा मानते थे कि नेपाल तो बिल्कुल इंडिया के ideologically close है, but China has now gone into it. From your understanding perspective, just if we talk about the neighboring countries, right, जो ये narrative की लड़ाई है, is China winning that, or do you see कि India has come back in certain part of the world, specifically during COVID, and now kind of India has also regained its advantage back? How do you see that currently, and how do you see that going थोड़ा future में भी, अगर हम सोच के चलें कि कैसा रहने वाला है?
तो इसमें देखिए, I call it surrogate warfare. Surrogate warfare, as the name suggests, is through the influence of people who you can control or you can manage or who can speak up for you, who are your, sort of pawns and soldiers. And in this case, there are these smaller countries, smaller economies. अगर हम चाइना का larger scheme देखें, तो China started giving out loans to countries and as part of its BRI project. And वो जो loans, if I would point to a statistic, today जब China ने loan देनी शुरू करी, तो 10% of those countries were having issues in terms of repaying their debt. Now that 10% has gone to 70%. 70% of those nations are unable to repay their debt. And I'll tell you why I'm starting with this. तो 70% nations जो Chinese loans ले रहे हैं, उनको वापस करने की क्षमता नहीं है. अब वो 70% नंबर रेज हुआ है 10% से. जब चाइना शुरू किया था ये लोन देना 2008-9 में 10 में, तब that 9-10, I think around that time, it was the figure was 10% of those nations were not economically strong. Now that becomes 70%. And this is not just my numbers. These are numbers that have been brought out by independent global bodies, that 10% से 70% में जो jump हुआ है in countries की economic जो हाल की जो पतन हुई है इनकी repayment capability की, उस 70% rise के पीछे 40% of those countries are because of the Chinese loans. 40% for the 10% to 70% जो countries rise हुए, the inability to pay, that rise is dedicated to 40% of, the reason is 40% of those countries have reached that stage because of their inability, because of having taken Chinese loans. Now when in this kind of a context, in this scenario where आपने जो loan दिए हैं, I mean, it's like a bank giving loans and without the borrower having the capability to pay back, and bank is giving away loans. कोई मतलब नहीं, कोई issue नहीं है. But the borrowers, after a while, do understand why the lender does not bother. Because the lender will come and stay at his home. Lender will come and drive his car. भाई हम आप ये भी conditions हैं. So I'm just giving you a kind of a perspective. Got it. तो ये अभी Chinese loans शुरू में सबने लिया, भैया पैसा मिल रहा है. Let's take the money. Let's run the economy. लेकिन the credit comes with a set of baggage, conditions, right? And those conditions are harsher than what you face before the loan. And that is how Hambantota port in Sri Lanka was, that asset was taken over by China. That is how a number of places, I mean, Pakistan is virtually become a vassal state of China. तो ये देखते हुए countries, Bangladesh is one of them, realizes, and Bangladesh has pushed back on recent Chinese projects. They realize that taking on Chinese loans encumbers them and also can create deep troubles for them in terms of they're running their own countries, the governance of their own countries. China would give, for instance, submarines to Bangladesh at 1/10 the price of submarines that are available elsewhere. But those submarines came with condition that there'll be Chinese engineers staying in the ports, Chinese. तो धीरे धीरे करके आप जो है China का जो policy है of nibbling away, that works at all levels. That is whether it is land, whether it is sea, whether it is giving any kind of assistance, economic assistance. It always is attached to these conditions where Chinese presence in terms of engineers, in terms of its in terms of its buying land, in terms of property in those nations come along with those loans. So is because of these things, some of the nations are staying away from Chinese loans. Now, over a period, what has happened is जो China initially जो move China ने किए थे श्रीलंका में, Maldives में, अभी आप देखिए Maldives में the government has changed. The government is not the Chinese placed government. It is a democratically elected government, and it is a very, it has better relations with India.
Sri Lanka has gone on to have better relations with India. So these are short-term measures, but China will always continue to do that. Abhi aap Nepal mein dekh rahe hain. But the fact is, you also see that Nepal, there was a visit by the Nepal Prime Minister to India this last week. And Nepal, like you rightly said, Nepal has got deep cultural ties with India. But India ne bhi galtiyan ki hai. Nepal ke, in terms of our relations. And I think it's important to ensure that, we have a neighborhood which is not economically dependent on China. It is our responsibility as well. We cannot complain that China has come and not, made forays, made inroads into these economies. China will continue to do that. It is our lookout. And kya hota hai ki economically, China pumps in money, whether it is through loans, whether in Nepal's case, there are a lot of Nepalese retail stores, Nepalese businesses, local businesses, which has Chinese money, but which is front-ended by Nepalese business. Nepal underwent a change by writing its own constitution in 2016. तब से Nepalese political systems थोड़े weak रहे. चाइना का फोकस क्या रहता है कि जहां पर डेमोक्रेसी वीक है, जहां पे अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट है, वहां पे चाइना वांट्स टू इन्फ्लुएंस दोस गवर्नमेंट्स. एंड इंडिया's strength lies in democracy. So the sooner or the more strong the local democracies are, or India helps them retain a sense of solidity in terms of the political systems, will keep away Chinese interference. Maldives में authoritarian government था, Chinese influence. Nepal में when the previous government was there, so that weak government again was exploited by China. So that will always happen. And stepping out of this zone also, China will try to influence Taiwan. Taiwan में elections हो रहे हैं 2024 में. There is a pro-China party in Taiwan, which will try to push Taiwan towards a political system wherein they are in favor of China. China wants to organically influence a lot of these societies and economies. Let's understand, हम लोग क्या सोचते हैं कि जैसे रशिया यूक्रेन में चला गया, चाइना भी कहीं घुस जाएगा. नहीं घुसता है. चाइना 1979 के बाद में, 78-79 के बाद में, चाइना कहीं पे लड़ा नहीं. And China's last victory was in 1962, where they had gained land against India. But after that, the Chinese haven't won any war. So China's approach has been to posturize, to posture, and to make these gains by way of crawling, nibbling away lands, getting inside the. Abhi aaj ka, the latest approach is to organically eat away the economy or the society from within by changing narratives, by pumping in money, by lending money, and getting those economies and political systems in favor of China. So that is what they understand they are better at, rather than outright wars. Just to conclude this, I wanted to understand two things now. So last thing probably. So one is कि दो narratives हैं अभी popular उसमें. One narrative feels that China is in a self-destructing mode. That narrative says कि उनकी country age हो रही है, politically there is a lot of instability, लोग against जो वहाँ पे लोगों के against हो रहा है, कोविड में खासकर जो हुआ है काफी गुस्सा है, तो वो खुद से एक ऐसे मोड में चला गया है जहां से उसको वापस उठना बहुत डिफिकल्ट है. दूसरा नैरेटिव ये बोलता है कि एक बायोलॉजिकल वॉर है, एक साइबर वॉर है, एक टेक्नोलॉजिकल वॉर है, जिसमें वो जीत रहे हैं. चाहे फिर वो कोविड के टाइम पे जो हुआ, जो उसने वर्ल्ड को नुकसान पहुंचाया, एक नैरेटिव ये है कि वो शायद जान के हुआ या उसमें कुछ गलतियां हुई उनसे, या वो ऐसा कुछ प्लान कर रहे थे. सेकेंड है कि भाई साइबर में, इंफॉर्मेशन में जो शायद काफी नोन है, अभी काफी कंट्रीज बैन कर रही हैं उनकी एप्स को एंड ऑल, राइट? So from your understanding, what is the correct narrative? Are they gaining advantage? क्योंकि जैसे आप खुद ही बोल रहे थे, आने वाला जो वॉर है वो मिलिट्री वॉर नहीं होने वाला है, शायद वो टेक्नोलॉजिकल वॉर ही होगा. अगर वहां पर वो एडवांटेज गेन कर रहे हैं तो दे विल प्रॉब्ली रूल द वर्ल्ड. सेकेंड है कि अगर वो इंटरनली ब्रेक हो रहे हैं तो प्रॉब्ली देन काफी प्रॉब्लम्स उनको इंटरनली आने वाली हैं. दे विल नॉट बी एबल टू काइंड ऑफ be where they want to be by 2040 or 2049. तो आपके हिसाब से क्या सही नैरेटिव है, और what is happening presently and what will happen in future with China specifically in these two domains? No, it's a very relevant question, Ishaan. Very good question. And
the way I look at it is that Xi Jinping या China का जो main aim है is, and he has said that when he was re-elected, that the reunification of Taiwan is an important part of their internal, the political existence of China or Xi Jinping is dependent on how they are able to manage that promise. और वो promise जो है हम अगले कुछ सालों में देखें किस तरीके से होता है. और I believe that China would go in for a peaceful reunification of Taiwan through, as I said, through organic means, through changing the political system, etc., and making it pro-China, or instead of going for an outright invasion. That's what I think. That's what it is. It seems likely at this point. So that is one that will determine how China exists, or how the current political system exists in terms of its efficacy, in terms of its acceptance within the larger Chinese public, amongst the public in China, internally. So that will also determine or showcase Xi Jinping's ability and power to take China to become a global leader, a supreme leader, a superpower leader. और अगर ताइवान का reunification हो जाता है अगले 4-5 साल के अंदर, तो it also makes Xi Jinping stronger than anybody else in the past, because that virtually seals the deal for him as China's supreme leader, who has reunited a land which his predecessors were. So some of these pointers will indicate where China goes. Or insofar as, China is a system, and China also faces a lot of internal issues which we don't hear about, that will also, and these are the aspects that will determine whether Xi Jinping becomes stronger or less strong, and whether they start to question their own system based on how successful or not Xi Jinping becomes in the next 4 to 5 years. And these are things that will determine, because these are promises that have been made on the back of which Xi Jinping has been re-elected. So number one. Number two, your thought about where are we going with China become more powerful? Yes, China will become more and more powerful, and it will continue to influence the global systems. Whether China becomes moderate in its and less sort of antagonistic, less aggressive, will be determined by how China succeeds in some of these current measures that they are undertaking with respect to Taiwan, etc. दूसरा ये है कि it also will be determined by what is the level of friction that US and China have in this region, and where is India in that equation in this region. Currently, India is a part of Quad. Chinese will continue to be launching more and more, the cyber warfare measures, the information warfare, the electronic warfare. वो सारी चीजें चाइना की चलती रहेगी, and that perception management जो उन्होंने after the spread of COVID they tried to do, and कुछ हद तक they succeeded as well, will always have an element of tussle between China and the rest of the world. It's an interesting period. We may or may not have all the answers yet, but I think China will become increasingly more powerful, and there will be a point where US influence in this region will continue to drop. There will be, however, more anti-China, I wouldn't say anti-China, but more and more countries which are aligned together and will get together to protect their interests against the Chinese hegemon. We have seen how India and Australia have come together in recent times, and they have never been that close as of now. So this will also increase. You'll see India, Japan, India, Australia, India, France. Some of these countries will also become more and more will get closer to India. The UK, for some strange reason, has its own policies, which maybe indicates to me that they haven't really, sort of
been in the same space as Australia and Japan as far as India is concerned. But you will see more of these closer bilateral proximities built up. And we have always been saying that, oh, US ka kitna yahan pe influence rahega, nahi rahega. I think we will slowly get away from there. You will see China on one side, and you'll see this little cobbling of groups together, which includes France, India, Japan, especially the regions which are in this region, in this area. Countries that are in this region, Japan, India, Australia, will play a key role in terms of asserting themselves in the Indo-Pacific as we go along, because otherwise it'll be the Chinese takeover. And they do understand that. India does understand it. India also has its own independent stance, which the Foreign Minister, Mr. Jaishankar, has very articulately described quite a number of times. I think that is where India is. India recognizes the rise of the Chinese capabilities. And I see that happening more and more in times to come. It is only some of these happenings which will determine where China goes from here and where India stands. And one of them is Taiwan, which that will determine how much muscle China possesses and whether the Chinese bite is as good as its bark. So thank you so much. I think been a very, very interesting and enlightening session. बहुत कुछ I think समझने को मिला है. I think from an audience perspective also, right from the history, from where we started to the present and what we can expect in future, there's a lot that we have covered. I'm sure that people would come back and they will have some questions and comments. Hopefully, if there is something specific that they want to understand, we can connect again and do something like this again in future. But thanks a lot for taking out time, and I'm sure that people are going to enjoy this session a lot. Thank you very much. Appreciate your time, Ishaan, and thanks for calling me to the show. It has been a pleasure.